45, the name itself denotes label printer, 4-inch width, 5 IPS, 5 inches per second. ठीक है? If you look at that printer, it has an open design. मतलब जो डिज़ाइन करने के लिए आप पूरा उसको ओपन कर सकते हो. अगर आप चेक करना चाहें तो देखिए. It can come out fully. तो आपको रिबन इंस्टॉलेशन एंड ऑल दैट प्रोसीजर बिकम्स वेरी वेरी इजी. क्योंकि कोई कोई प्रिंटर्स में आधा रहता है, तो आधा रहने के बावजूद आपका हाथ में से आपको पोजीशन करना डिफिकल्ट हो जाता है. उसके अलावा ये जो प्रिंटर है इसका मेमोरी स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो 8 MB फ्लैश और 64 MB DRAM है. राइट? फ्लैश और DRAM का मतलब मालूम है आपको? मतलब क्या आइडिया है? हाँ, फ्लैश मतलब नॉर्मली क्या होता है, फ्लैश में आपका फॉर्मवेयर फाइल्स रहता है, फॉन्ट फाइल्स रहते हैं, .bs फाइल्स रहते हैं. राइट? जो OS जो प्रिंटर का OS कोड लेवल जो है वो सब आपका फॉर्मवेयर में सेव रहते हैं. राइट? जो आपका फ्लैश में एम्बेडेड रहते हैं. और उसका DRAM इट वर्क्स लाइक अ हार्ड ड्राइव. तो इनिशियल प्रोसेस जो है फ्लैश से इनिशिएट होगा प्रिंट एक्शन और प्रोसेस होंगे DRAM से. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 8 MB फ्लैश एंड 64 MB DRAM का मतलब क्या है कि इसमें DRAM बफर स्पेस ज़्यादा है. बफर स्पेस ज़्यादा है मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक ही टाइम पे फॉर एग्जांपल 500-600 प्रिंट्स की बात की तो बफरिंग जो है ये फास्टर हो जाएगा एज कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स. इसके अंदर जो पेपर रोल की बात, पेपर जो रोलर की बात कर रहे हैं, यू कैन हैव 1 पेपर रोल पे डाया जो होता है 300 मीटर पेपर रिबन. 300 मीटर्स रिबन मतलब ये हुआ जो रिबन का कोर होता है इज गोइंग टू बी 300 मीटर. 1 इंच का कोर होगा और 300 मीटर का रिबन कैपेसिटी होगा. राइट? हमारा LP46 जो मॉडल है उसमें 0.5 इंच का कोर है. हमारा और एक मॉडल है जो L42 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसमें 0.5 इंच का कोर है, इसमें 1 इंच का कोर है. रिबन जब आप इंस्टॉल करोगे प्रिंटर में, आप रिबन इंस्टॉलेशन जानते हो? राइट ना? तो रिबन जब इंस्टॉल करते हो तो जो शाइनी साइड है वो अंदर होगा, जो डल साइड है इट विल बी ऑन द प्रिंट हेड. बराबर ना? करेक्ट? तो डल साइड का मतलब लेबल कैसे, मतलब प्रिंट आउट कैसे होगा? तो नॉर्मली कैसा होता है, रिबन में वैक्स रहता है या रिबन का जो मटेरियल बनता है उसका रेजिन हुआ या वैक्स रेजिन हुआ, वही मटेरियल का आपका रिबन बनता है. तो जब नॉर्मल प्रोसेस इनिशिएट होगा तो स्मॉल पल्स ऑफ जो ट्रिगर होता है, जो पल्स होता है वो जनरेट होने की वजह से जो आपका जो वैक्स का कंटेंट मेल्ट होके आपके लेबल के ऊपर रास्टर करके होगा. इट विल एडहेयर टू द पेपर और रास्टर ऑन द पेपर. हाउ द डिजाइन विल बी जनरेटेड? द डिजाइन विल बी जनरेटेड थ्रू द सॉफ्टवेयर. करेक्ट? ये क्लियर है? तो नॉर्मल आप रिबन बिठाओगे, ये जो कोर है, ये जो स्पिंडल है उसका अंदर स्लॉट्स में आप फिक्स करोगे तो इंश्योर ये मूव नहीं होता. ये स्लॉट पे आप बिठाओगे रिबन लेबल को अंदर. राइट? और नीचे अगर एक ग्रुप इधर आ सकता है तो इधर आ सकता है, तो मैं उनको बता सकता हूँ कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स. वन इज अ गैप, एक टाइप पे अगर इसे थोड़ा मैं आप आगे तो 2 टाइप ऑफ सेंसर्स होते हैं. हम तो एक और अपन बताएंगे. तो गैप और ब्लैक मार्क. ब्लैक मार्क का स्पेसिफिक पेपर होता है. थर्मल पेपर में भी ये प्रिंट कर सकता है. थर्मल पेपर आपको मालूम है, राइट? थर्मो सेंसिटिव पेपर होता है, स्पेशल कोटिंग होता है. तो ल्यूकोडाई एंड एसिड वैक्स होता है उसमें. जैसे नॉर्मल जब प्रिंटिंग सेटअप हो जाता है तो नॉर्मल पल्स मिलता है ना उसको. तो जब पल्स मिलता है तो वैक्स जो है मेल्ट हो जाता है. करेक्ट? और मेल्ट होने की वजह से इट विल क्रिएट अ माइल्ड एसिड और वो पूरा जो है वो रास्टर होके आपका थर्मल पेपर के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा. बट रिबन में क्या होता है, वैक्स मतलब एक्चुअली वैक्स है तो वो आपका कंज्यूमेबल हो गया. बट कोटिंग में आपके कोट के अंदर वो वैक्स मेल्ट होके प्रिंट और ऑटोमेटिकली बर्न होके वो प्रिंट हो जाएगा. करेक्ट? तो थर्मल में अगर हम जैसे प्रिंट करें मार्क को तो ये लोग तो नॉट द परमानेंट मार्क है, पूरा भी range after some time. that is for that we have to use specific consumable. That is the reason why we had talked earlier about resin ripples and wax resin ripples. मतलब इस LP45 में थर्मल
थर्मल पेपर जो होता है, थर्मल पेपर भी सेटअप हो सकता है। कभी क्या होगा, तभी आपको प्रिंटर जो गैप होता है वो गैप पे ही कंटिन्यूस मोड पे सेट करना पड़ेगा। रिबन नहीं, रिबन की जरूरत रिबन का तो नहीं, रिबन क्या उसमें रहेगा या उसको जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो। बट अगेन वो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, उसके पॉइंट पर मैं आ जाऊंगा कि थर्मल एप्लीकेशन जो है वो कैसे सेटअप होता है और जो लेबल एमुलेशन जो अपन बात करेंगे उसके बाद। Which comes along with the printer and that will help us how to design a particular label. Correct? तो जब आप डिजाइन करते हैं तो बारटेंडर सॉफ्टवेयर आपके सीडी के थ्रू मिलता है. It's an exe file which needs to be run, and once you run it, it will have an icon which will be placed on the desktop. Correct? So we are going to click on start on a new template, blank template over, and then we will click on finish. As we already have the driver loaded, driver also is going to be like a normal exe file. It will set up your port and it will print out a test page. So detection is auto. Once you connect the printer, it will come up with the name TVSC LP45. So that clearly indicates that your printer INF has been detected by your OS, and it actually comes up with the printer name. Right? So once that is done, what we have to do is we have always have to measure करना पड़ता है labels को, right? अगर हम measure नहीं करते तो कभी भी एक मिनट फिर से एक बार करें, क्या एक बार स्टार्ट करें, ऐसे एक बार बारटेंडर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है. ठीक है, स्टार्ट ब्लैंक टेम्पलेट. आपको नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट कर लीजिए. ऑटोमेटिकली वो जो ड्राइवर सिलेक्ट करेगा. यूज अ कस्टम साइज और फिनिश करोगे तो ये लेबल साइज क्या है. ये जो लेबल साइज अभी तक डिफाइन नहीं है, हमको डिफाइन करना पड़ेगा. लेबल का साइज क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, ठीक है. तो इस पे जब आप लेबल पे जब क्लिक करोगे तो ऑलवेज डू अ राइट क्लिक. जब राइट क्लिक करोगे तो उधर एक रूलर एंड ग्रिड सेटिंग्स करके आएगा. ठीक है, रूलर एंड ग्रिड सेटिंग्स में यूजुअली यू शुड सिलेक्ट मिलीमीटर बिकॉज इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट इन मिलीमीटर रादर देन इंच. बिकॉज 1 इंच कितना मिलीमीटर होता है मालूम है? 25.4. तो बेटर टू तो फिर इंच में फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता है. कभी कभी 4.3 इंच होता है तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है लेबल प्रिंटर्स में. तो देन योर डिजाइन गोज अ बिट हेयर. तो परफेक्ट साइज होगा. साइज किधर होगा? आपका नॉर्मल बारटेंडर सॉफ्टवेयर में होगा और आपका प्रिंटर ड्राइवर में होगा. राइट? सो इफ आई जस्ट मेजर, दिस इज 80 mm width and 38 mm height. विड्थ एक बार चेक कीजिए. पूरा पूरा जो लेबल से यहाँ तक लेबल से कितना 80 पॉइंट बताइए आपके सबसे में बन होगा. 82 राइट. और हाइट बताइए कितना है? हाइट कितना है? इसका ही लेना है. 30 38. ठीक
ठीक है, तो 38 हुआ आपका हाइट, करेक्ट। ओके, और इसमें कॉलम कितने हैं? दो है, राइट। तो लेआउट में आप कॉलम दोगे, करेक्ट। और अभी आप डिजाइन करोगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बारकोड डिजाइन करता हूँ, डेटा मैंने डाल दिया। अब जो मिल साइज की बात कर रहे हैं अपन, वो पॉइंट पे आएंगे इधर। ये आप इधर डेटा चेंज कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल मैं ABCD 1 2 3 भी डाल सकता हूँ। डेटा सोर्स में कौन सी? डेटा सोर्स इन डेटा बड़ा लाइन वो अपन देखेंगे, ठीक है। whatever is the commodity, say for instance any in a grocery shop or something, that you can type right Yeah, that is something which we need to enter. That's going to be the encoded one. Depending upon what data you want to enter, you want to put it here there in data source. in the data source. Okay, and then if you want to set up a text, then probably you will have to set it up from here. Right? So this is more of a designing software. It's about how you get into it, get to know about various tabs, various columns, and then it's about We doing want the to omit the barcodes in the text. What I do? omit the barcodes in the text. Barcodes in KBS, say we are looking at image, a sample page, and we just want to. You don't want omit that, the but barcode. what happens is this printer has its own specific printer language. That is the reason why it's coming like this. If you don't want to select that, if you want to select the Arial font, it will not come like that. Okay, now it will not come. First to you because this I have seen at the time of Jira printer Okay. installation. So I must. Right. So the thing is, if we are going to give a PRM file to the software team and discuss about the PRM file also, we need to ensure that we are not using any Windows font. We are going to use the printer font only, which is SMBC font, which is currently used inside there. We are in the process of creating at least one Windows font which can help out in generation of a PRM file. It will be released soon. Okay. So this is how it will look. ठीक है ना? Text और ये. Now once this is done, we have to again हमने क्या साइज दिया था 83 और 82 and 38, right? Now we have to generate the same settings in the driver, okay? Because that has to map. If that doesn't map, then we probably will have problem with the printing. So for that, what we do, we go to preferences. Okay, under preferences, there is where we can edit the label size. Okay, here again it's in inches, so we have to convert that into millimeter first. So for that we go into tools, driver options, regional options, and change that to millimeters. Okay, so once you have done that, the unit of measurement in bartender as well as the driver remains the same. Alright, so once you do that, you can click on apply और आप OK करते हो, ठीक है। एक बार OK करने के बाद हमको क्या करना है, हमको वही साइज हमको ड्राइवर में देना है। तो ड्राइवर में हमने जब देना है तो आपको प्रेफरेंसेस में जाओगे तो अभी आपको प्रॉपर मिलीमीटर में दिखता है। अभी आप इधर एडिट करोगे तो आपको इधर कितना बिट दिया था आपने 82, राइट, और 38, तो 38 आप सेटअप करते हो और OK करोगे, राइट। फिर ग्राफिक्स में आप इसको नन करोगे, सो इट बिकम्स अ बिट ब्राइटर। Stock remains the same because we are using thermal transfer. It is not direct thermal. Thermal transfer is we are using a ribbon. Label with gaps is there, so it is 3. It can be 3 to 3.1. That is something which we can change. Okay, and it is post print action is tear off. Tear off is it will come to a point because once we have done the calibration, it will come to a point where we can tear off the labels. So it is near the gap. So gap is set up correctly.
और इधर आप अप्लाई करोगे. So this is not the only place which we have done. We have to do it one more side, which is advanced printing defaults, and here also we are going to change the size. So this is something which you need to write it down because you will end up forgetting. So preferences as well as advanced. So advanced also we go and change it on 82 38. Okay, and then graphics again would be none. Stock label with caps, you click on apply. Right? Now when you take a print, you do a control P, you have to ensure that you give two prints because there are two. बराबर, दो कॉलम. So this is how it will print. For example, I just give 6 prints. So this is how it will print. क्लियर? अब समझ गए ना. अभी तो उसमें क्या करना था, हमने क्या किया, दो जगह पे हमने लेबल साइज प्रॉपर दिया. लेबल प्रिंटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो लेबल साइज पे सेटअप नहीं होती. लेबल साइज प्रॉपर सेटअप नहीं होता. वी हैव लॉट ऑफ इश्यूज, लॉट ऑफ कंप्लेंट्स सेइंग दैट देयर इज अ डेविएशन. Is there a soft copy of instructions what you just telling? Can that be forwarded to us? Yeah, sure. So this is how it has to be done. ये क्लियर है? Normally आपका जो minimum height of the label can be 15 millimeter and the maximum height could be around 10 inches. If the person wants multiple data, like for instance in the barcode, he wants the batch number and the say amount to be incorporated. like MRP. Yeah. How does it do it? Does it give a comma in the embedded text? What happens is that's more of a syntax, right? You will create a text called MRP or batch. Okay, on the right hand side would be the variable data. The variable data would be defined from the software. In bartender itself? No, in Bartender, that's what I'm going to come back to that. We are going to generate a PRN file in here, and the data which is there on the right hand side, if you click, then they will write a small syntax. For example, apostrophe, and they will give the path of the data from their server side. In an Excel sheet or whatever? In an Excel sheet. You can do it in an Excel database also or from an Excel sheet. Does your soft copy also cover that? Our Bartender software supports Excel database, but then it supports it for a 30-day trial offer. Yeah. So it will support that. Or otherwise, we'll have to purchase the original Bartender. Original Bartender, if you purchase it, it comes up with a licensed version. So then it's like a lifetime thing. You can use your Excel database connectivity. What's the price of the Price is different because you normally a license would be for one, it could be for 3. I think it's something in the range of 12,000 rupees to 15,000. I'm not sure, but that is the range. Normally there are customers who buy it. Is there any other alternate software apart from bartender? We do have it. For that, probably we'll have to change the emulation to a different one. The current emulation will support Bartender. The other emulation which is there, it will support a BPLA emulation, which will have an inbuilt software, like what a Godex software has, which will have. We have to come out clean to the customer saying that this is only a 30-day trial. Yes, And that cost also adds up to the printer cost. The solution. Yes, yes. Because obviously, it's a software. Like when you purchase a software, it's obviously more than what the printer would cost would be. So it's far costlier than the printer. Yes, software is always costlier than the printer. But then we give it for a 30-day trial offer. So 30-day trial offer will support serialization, database connectivity with Excel. So it will work for 30 days. After 30 days, what happens is people will think of uninstalling the Bartender and setting it up again, but it won't work. It won't work in the sense your function of database connectivity will work, but the data, there will be a mismatch in data. So the other option what people do is they try loading it on various different PCs and get it working, just because they don't want to buy the Bartender software. Because what happens is it gets saved in the registry. So once it gets saved in the registry, it's next to impossible to go and delete each and every file which is under the PAR content, because it has value 0 and 1. So if you end up deleting anything else apart from that, it might end up screwing up your software. So you might have to reload the version. Yeah. I think it's from Godex. These are also the regular designer software is for 30.
But for barcode, it's a 30-day trial. But we have what one more, for that you'll have to change the emulation and be very specific to use it only for database connectivity. We can use that. No, another thing, if from parsing means barcode depending on the data, then it should be like a database or a software related or a software incorporated barcode machine. Means barcode should depend on the data he has actually. Right. So he has to store the barcode in his software also. Yes. In his system. Yeah, in his system. In his system, and because that data is something which is going to correlate with that particular item. Right? At MKB. You will not give you the actual data of your product. No. This will help you. It's a designing software. Exactly. What it's going to do is it help you generate a design. It will generate design करेगा, जिसके तरह से क्या होगा? आपका variable data बारकोड जब मैं बारकोड डिजाइन करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ? वैल्यूज प्रॉपर डिफाइन करता हूँ, पोजीशनिंग ऑफ द बारकोड बराबर करता हूँ, कहाँ से पोजीशन, कहाँ से स्टार्ट प्रिंटिंग करना है, आपका टेक्स्ट कहाँ से पोजीशन करना है, ये सब मैं डिफाइन करता हूँ. उसके बाद आपका वेरिएबल डेटा है वो तो आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू आएगा. अगर मैं ये चीज प्रॉपर डिजाइन नहीं करूंगा तो क्या होगा? आपका प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आएगा. तो इट इज जस्ट अ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर. Means actually, what is that? The barcode will help you to face the data from your software in a easier way. That is the only. It's organized. Yeah. So this is what we are going to talk about. So when you talk about PRN file again, PRN file is generated from the driver. It will have your coordinates. Once the coordinates come out, that coordinates usually we give it to the software people. What they do is that those coordinates they will try to incorporate in their software. Along with the variable data, they will write a small syntax and they will keep on fetching. Right? So that is the idea what a bartender software is all about, and what we can look into a PRN file also. So that will give you an exact idea when I'm talking about designing template, right? From what point it has to start, what is this, what is density used, what is the printer value used, all that will come in the PRN file. See, maybe I will try to clarify a little bit more. You can take barcode printing two ways. The easiest way is having the variable data in Excel. You may be having a variable data in Excel, or for that matter any other database applications like Oracle or DBase or whatever. Then you use a bartender utility to create a barcode label and take the data from there. That is one way of doing it. The other one is you have an application, maybe your ERP application or something in the background. Okay, you are not discussing about database in Excel and all now. So it is an ERP application in the background, and your ERP application is going to give the variable data, barcode data. Now there, how to print a barcode? Again, we will be using a bartender software there, but only once. To create a PRN file, what we will do, we will create a PRN file and we will use that file and we will embed that file in the ERP application. So maybe I think that you will be telling us. Yeah, no, that's what I'm going to tell. So basically two types of barcode printing possible. One is using a bartender utility itself and using a Excel or any other database. Directly bartender will pick up data and it will print. Second one is from the ERP application. So when you are going to print a barcode label from the ERP application, you have to generate one time. That bartender will be using one time in the initial time to create a PRN file. So that PRN file will give the structure, it will give the coordinates. This is the text, this is the barcode starting point, like that coordinate will come. So that will be embedded in the ERP application. So two types. Now again, as he was mentioning, bartender license is only for 30 days, which comes free along with the label printer. Suppose if somebody wants to use a Excel data, for example, what will happen? A gift shop will have a customer details in an Excel, okay, and he may be sending greeting cards or something like that on the birthdays of the customers, right? So every day he may have to take some 100 labels of his earlier customers who had visited his shop. So he will be having his database in the Excel. So if he needs to take that, then that bartender utility anyway beyond 30 days it will not work. Okay. So you are expecting your printer to support a database function. For that only the solution is license. You have to buy a license.
so that you will be able to use bartender utility with database lifelong, which is going to cost some 14,000 or 50,000 rupees. So that's separate, that's ruled out. What we have done in this model, LP45, this particular model, we have come out with a special emulation. Normally, it will come with a standard. By standard, it has some emulation. It works with the bartender utility in a normal way. But we have developed a special emulation that is available only on demand. Only on demand. We give that emulation, we load that emulation in the printer and give. Along with that, instead of bartender, there is a different utility called BY label. Correct? Yeah, BY label. That has a database support function forever. There's no time limit. Okay. But only thing is, once you load that emulation, you will be able to use only for that application. That is why we are not giving it as a standard. So standard, we are giving the regular emulation whatever the market is selling. So if somebody is interested, very keen, for example, you want to sell this printer, give this unique solution to your customer, then probably you can demand the printer with that particular emulation, saying, boss, I want a database support emulation. Then we will load that emulation. It comes from the warehouse directly from Chennai, and you can keep it in stock and keep giving to selling to your customers. Any additional cost for that? As of now, no. Since it's the initial period, we are giving it just for promotion. As of now, no. So you can plan to, but one requirement for that is you may have to, your engineer had to be trained on that BY label software, just like bartender. It is nothing but similar to bartender only. Function, everything is similar to whatever he is explaining now, how to create a label. Process is exactly the same. Okay, but only thing is it will support the database forever. And we can share out a small document This along with emulation it. is not there for, is similar for other competition products like Zebra and all that? Zebra does not support. There is one more, maybe one more vendor who is giving a database support is I think Codex. Codex. Printer is very costly, and install base is not high. So I don't know whether the support functions are all available for those models. But here from our side, both are available. Both the emulations are available. This we are giving only on demand. No, So in case there is another thing that the customer has an idea that if he or they use barcode, they will get all the data with a single flash. Or with a, that is the idea of the customer, mainly of the lay customer. So this is the point is that if we want to use this barcode printer means as a solution, so we have to tell them that this is not for your data and everything. This is for the identification of the product. Correct. Yes. And if customers want, if customers want to generate the data or to get the data from them, then they have to use the software where the barcode has to be incorporated with. So if we use a software with a barcode, means a barcode can be used along with the software only to get the full essence of the barcode. You are absolutely right. It depends on how the application is. Now let me tell you one more example where this database may not be required at all. No, that's I am telling because we are dealing with this type of things for the last 10 years. Correct. So I am telling Correct. because these are the experience of ours. Yes. Because it is all matter of awareness, sir. Because they feel that I buy a label printer, I'll be able to print any label. Actually, it is not so. But let us take an example of, say, a departmental store. Let us assume he is having a tur dal packet, some 100 numbers coming from this warehouse. Now, he need to put a MRP sticker. So, tur dal 100 grams will be written there, and that EAN number will be there, barcode number will be there, MRP will be there. So, that he need to take 100 copy. There, your normal bartender utility, which does not require that database support, is okay. He can continue to use it. Yeah, because it's going to be the same static price, right? Same label, he's going to print some 100 numbers. So what he will do, he will go to a bartender, like the way you have now configured. He will configure one label, and he will just give 100 or 200 or whatever it is. Depending on the inventory which he has. I have seen this happening even in the garment stores. No, actually in the departmental stores, when they are selling a branded product which has a barcode printed already there, they are also tagging a barcode over there. About that, because this barcode is supported by their system. Correct. Absolutely right. Very.
right? So you can see this. So when we are talking like Babu sir mentioned about a PRN file, so print to file. This is something which we सर, एक बार और एक बार बताएंगे तो PRN फाइल कैसे वही बता रहा हूं। पता है नहीं, ठीक है? तो PRN फाइल कैसे जनरेट होगा? We'll let you know now. So this is going to be the design, correct? You are going to do a control P. For example, it is going to be the number of prints which you are going to decide, and at the top of it, it comes up a print to file option, right? When you select the print to file option and you select print on it, it will not print. It will ask you the location where you want to go ahead and save the PRN file. So you can actually browse it and you can save it anywhere, maybe on a drive or a desktop. So for example, I save it as 1, 2, 3, and I click on save. It will say print. I print it. So when I look into it, I find a 1, 2, 3 PRN file just looking like this. Alright. So what does this? It is nothing but your data. It has the left and right coordinate, the orientation, the barcode font, 2 and 4, which is going to the horizontal and vertical direction. But from your point of view, a PRN file is supposed to be given to the software person, right? So you need to ensure that the actual print, the first time when you print, it should come correctly. And the first time when it comes up correctly, obviously the value which he is going to call in the software is going to work perfectly fine. Correct? So when you, for example, this particular printer, it will support VB.NET, ASP.NET, C#, almost all the software which are there in the market. Okay, so for the C#, yes. 4 इंच by 4 इंच का लेबल हुआ। आप क्या बोलते हैं MRP और प्रोडक्ट जैसे टी-शर्ट, प्रोडक्ट नेम, फिर ये राइट साइड में MRP है। ये वेरिएबल डेटा हो गया। आगे बताइए। Size, colors, प्राइस, कलर, साइज, राइट? ये नॉर्मली यही चीज होता है। आप क्या करते हो? इसका आप एक डिजाइन करोगे। डिजाइन करने के टाइम इसके लिए आप क्या करते हो? आप टेक्स्ट लेते हो, टेक्स्ट में आप नाम देते हो, करेक्ट? बराबर ना? ये जो है आप क्या करोगे? टेक्स्ट लोगे इधर, मगर उधर ब्लैंक रखोगे। ये सब ब्लैंक रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी है ये वेरिएबल डेटा होगा। तो जैसे आप PRN बनाते हो, ये में टेक्स्ट लेने का मतलब क्या हो? तो प्रिंटर को मालूम होना चाहिए कि बॉस मुझे कहाँ से प्रिंट करना है। इसके लिए मैंने वो टेक्स्ट का पोजीशन लिया, बट पोजीशन वो ब्लैंक होगा। तो जैसे आप PRN लोगे तो क्या सॉफ्टवेयर वाला क्या करेगा? PRN में ये तो एज इट इज रखेगा, क्योंकि वो स्टैटिक हो गया। जो डायनामिक हो गया वो क्या करेगा? ये इधर एक सिंटेक्स लिखेगा और उसका सर्वर का पाथ होगा ना, जहां उसका फील्ड होगा जैसे एक्सेल में, वो पाथ दे देगा। तो कंटिन्यूअसली क्या होगा? ये डेटाबेस से इट विल कीप ऑन पोर्टिंग डेटा फॉर ऑल दीज फील्ड्स। समझ गए? तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे सर समझा देते, जैसे आप छोटे दुकान में जाते हो, राइट, या बिग बाजार टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जाते हो, तो वहां आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फॉर एग्जांपल तूर दाल होता है, उसके पास जब इन्वेंट्री आता है तो तूर दाल के 10 मतलब 100 पैकेट आते हैं, तो वो क्या करता है? उसको मालूम है कि हाफ केजी का उतना ही है, हाफ केजी के 100 पैकेट के लिए खुद मैन्युअली डाल देता है हाफ केजी नेम हो करके, और एक ही टाइम पे सब प्रिंट करता है। उससे क्या फायदा होता है? उसको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, वो लेता है, चिपका है। सॉफ्टवेयर जो है मार्केट में सिर्फ 30% लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, बाकी 70% जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट होता है। वो बारटेंडर सॉफ्टवेयर जो होता है या ज़ीबा सॉफ्टवेयर जो होता है, जो भी सॉफ्टवेयर आता है वही सॉफ्टवेयर से अपना काम चला लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज जितने भी ERP सब ERP बारकोड से इंटीग्रेट ही नहीं करते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन ही नहीं करते। इंटीग्रेशन नहीं करते। और सेकेंडली अगर फॉर एग्जांपल अपना जो प्रिंटर, ये जो प्रिंटर SAP के साथ सेटअप है, तो SAP के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। उसमें क्या होता है? SAP में भी वैल्यूज देना पड़ता है। वो SAP का डेवलपर, EPAP डेवलपर का अगर मैं PRN फाइल देता तो भी वो सेटअप कर सकता है, बट हमको उनसे एक बार बात करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बोलता है कोई चीज़ कंपैटिबल नहीं है, नहीं आपका प्रिंटर कंपैटिबल है, लेकिन एक बार उसको बात करके उसको क्या चाहिए वो एक बार हमने मांग लिया और हमने उसको दे दिया तो इंटीग्रेट कर देता है। लास्ट में फंक्शन क्या है? ही हैज टू कॉल द पोर्ट। एक बार पोर्ट कॉलिंग हो गया, प्रिंटर प्रिंटिंग करने चालू हो गया सॉफ्टवेयर से, बाद में वो वेरिएबल डेटा अपने आप पास कर सकता है। प्रॉब्लम दिक्कत वही होती है कि हर एप्लीकेशन जो बैकएंड एप्लीकेशन जैसे ERP एप्लीकेशन, इट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पोर्ट। तो उसको पोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? बिकॉज दे वोंट बी यूजिंग द ड्राइवर एट दैट टाइम, करेक्ट? और डायरेक्टली पोर्ट कॉल करता होगा, तो पोर्ट कॉल करने के टाइम उसको क्या यूटिलिटी चाहिए, हमसे बात करके हम वो सपोर्ट कर सकते हैं, करेक्ट? और इसमें कोई और जानकारी इसमें? जैसे कि ये सॉफ्टवेयर बारटेंडर 30 दिन का है। बारटेंडर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए 30 दिन का है, तो जिंदगी भर सकता है। हाँ, डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए।
और जो PRN फाइल बना रहे हैं वो अगर एक बार बना लिए वो बना लिए एक फाइल customer- को करनी हाँ, वो अगर बना के दे दिए बना के दे दिया सॉफ्टवेयर। नॉर्मली कैसा होता है, जैसे आप बॉम्बे में बॉम्बे में रहता हूँ, तो बॉम्बे के सर्विस इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली जाते हैं डेमोस के लिए, ठीक है। डेमोस के बाद वो ऑर्डर फाइनलाइज होता है, तो उनके पास हर कस्टमर का PRN फाइल पहले से पड़ा हुआ रहता है, नाम देख के। कल उठ के कस्टमर का सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ या इसको OS रीलोड करना पड़ा, अगर उसके बाद PRN फाइल नहीं है तो भी ये पूछ लेता है अपने इंजीनियर को, बॉस में लास्ट टाइम आए थे तो PRN फाइल दो। तो इट हेल्प्स कि द इंजीनियर डजंट हैव टू गो देयर एंड डू द होल थिंग अगेन, तो PRN फाइल जनरेट करके रखता है। नॉर्मली कस्टमर को बोलना चाहिए कि आपका जो भी बैकअप है, जैसे एक भी बारटेंडर फाइल है, राइट, आप जब सेव करते हो एक BTW फाइल का एक ऑप्शन दे देता है, सेव एज। वो फॉर्मेट जो फाइल ऑप्शन जो है ना, वो एक्सटेंशन सेव करके रखना बहुत जरूरी है। बहुत कस्टमर्स क्या करते हैं, वो लोग सेव करते हैं दुनिया भर के टेम्पलेट्स क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ इट दिस इज एन exe फाइल, right? Is always there is an option where there is a possibility where the virus can affect it, so it will end up eating this file. You won't be able to open it. You might end up opening it, within a second it will disappear. So it's better to take a backup and keep all these files with you. So it becomes at the end on one fine day when things don't work out for you, those backups will always work, rather than designing the whole thing where this is already there. Right? और कोई इश्यू है इसमें, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। डिजाइनिंग आपको प्रॉपर आना पड़ेगा, आपको एक दो बार बैठ के लेबल साइज, डिफरेंट लेबल साइजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया 15 mm लेबल मिनिमम, वो से लेके 10 इंच का लेबल पे भी वो प्रिंट कर सकता है, क्योंकि गैप प्रॉपर डिफाइंड रहा। तो इश्यूज कभी कभी आते हैं नॉर्मल, जैसे आप लेबल में डील करते हो, नॉर्मल जब लेबल जब डिजाइन और जब स्टोर पे चला जाता है, वी फाइंड दैट 3 mm gap might differ sometimes. It might be 2.275 or it can be 3.25. At that moment what happens is we get a call registered from our side. If boss there is a problem with the printer, it has started skipping because it has not sensed the exact label size. Because printer is defined, right? We only calibrate it. It goes for an auto calibration mode and it will only sense that 3 mm height. So sometimes if there is a variation in that, then it will skip labels. So वो बोलेंगे यार मैं 50 लेबल दिया, उसमें 47 प्रिंट के 3 छोड़ दिए। So that is more of your सर बीच में गैप्स भी आ जाते हैं, Gaps. कंटीन्यूअसली प्रिंट हुआ, फिर 2 लेवल का गैप आ गया, फिर 3 बराबर। लेवल। तो इट इज हाँ, तो अक्सर क्या होता है, लोग बोलते हैं प्रिंटर का इशू है, प्रिंटर का इशू नहीं रहता है। अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, रिबन निकाल दो, फीड बटन दबाते रहो। तो फीड बटन जब जैसे दबाते रहते हो, राइट, तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 गैप पे आके रुकेगा, राइट। तो आप एक बार दबाते रहो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक टाइम पे रुका ही नहीं, तो वो पर्टिकुलर गैप का इशू। फीड बटन विल हेल्प यू डायग्नोस मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो दिस पार्ट ऑफ इट इज एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड कि वो जाके वहां पर लेबल क्रिएट करना चाहे तो कर दे। एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड। सर इसमें से एक चीज मुझे जानना है, इसमें ये तो कर सकते हैं। क्या जैसे रिव्यू करके बना सकते हो और इसको निकाल के ओवरराइट कर सकते हो। सर एक चीज और जानना है, ये जो टोटल जो डायमीटर है लेवल का जो लगा रहे थे, जैसे इसमें आपको ये बताया 127 127 में diameter to the overall dia of the label size, but up to सर तो लेवल जितना ज़्यादा डायमीटर लेवल लेगा वो वेट उतना ज़्यादा होगा। सर इसका तो ये इमेज टेक्निकल ग्रुप, जैसे बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि आपने इतना बड़ा लेवल का रूप देखा है, पेमेंट आने का नहीं खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप मल्टीपल कॉलम्स इधर नहीं, आप पहले नेक्स्ट स्टेप पूरा डिजाइन करो, फिनिश करो। अभी आपको पहले उसको MM में सेटअप करना है। क्या कर रहे हो? राइट मिलीमीटर। अभी आपको एग्जैक्ट लेवल साइज चेक करना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ, और डबल क्लिक करोगे जैसे आपने डबल क्लिक करोगे, ठीक है। तो इधर ये क्या हो, कॉलम का हो गया, आपको पेज पे जाइए और उधर सेटअप करना पड़ेगा।
आप जब लोगे ना तो आपको पूरा ये पूरा वेट देना पड़ता है, तो पूरा वेट तो 83 8 सेंटीमीटर इंटू 10 है ना, ये ऐसे पर सिंगल का नहीं लेना सिंगल से सिंगल आप कन्वर्ट करोगे कॉलम में बाद में, और ये ये एक ही सिंगल होता है क्योंकि वो ओवरऑल हाइट होता है। अब ये कॉलम दो पोर्ट्रेट ही होगा हाँ पोर्ट्रेट होगा, कॉलम दो दोगे लेकिन ना, क्योंकि आपने ओवरऑल नहीं ऊपर लेआउट में लेआउट हो गया आपका सिंगल है नीचे लो डबल हाँ कर दो। और एक कंट्रोल सी करो नीचे। सेव ऐसा करते हैं सही होगा सेव एज करोगे तो बारटेंडर फाइल सेव होएगा आपके डेस्कटॉप पे, और नाम चेंज करके रख दीजिए तो उसमें आपको पेपर की जरूरत पड़ेगी। कितना कॉपीज देना है, क्योंकि आपको दो लेवल है तो 2 कॉपी देना पड़ेगा। प्रिंट पे जाइए कंट्रोल की प्रिंट पे प्रिंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो पार्ट आपको जो है पार्ट देंगे तो प्रिंट टू फाइल निकालो, तो जो आपने डिज़ाइन किया वो प्रिंट कर पाओगे, अगर वो निकाल दिया तो वो किया नहीं कर पाओगे। प्रिंट करना है और प्रिंट टू फाइल का ऑप्शन निकालो, अभी प्रिंट कर एक दिया है, अगर एक दो दिया होता तो दोनों साइड में सेटअप हो गया, इधर ट्रांसपोर्ट दिया होता तो दोनों साइड में प्लेस कर सकते हैं, प्लेस करना इधर है तो ओवरलैप होगा, इधर आप ये पार्ट इसमें नहीं आया बारकोड आपने दिया ही नहीं था, वो यहाँ से दिया बारकोड से दिया, अपने ये बारकोड को लेकर निकलना है तो
आप पूछ रहे थे ना मिल साइज पूछ रहे थे, तो ये मिल साइज होता है। जितना कम करोगे तो उतना बारकोड छोटा होते जाएगा। बारकोड में x डायमेंशन होता है, दैट इज द मिल साइज। तो आप अपन सुबह डिस्कस कर रहे थे ना मिल साइज कैसा होता है। मिल साइज इज नथिंग बट कंप्रेशन ऑफ बारकोड रेशियो। कंप्रेशन ऑफ बारकोड रेशियो आपको यहाँ से मिल जाएगा। बट बारटेंडर सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो मैक्सिमम 4.93 जनरेट होता है। 3 मिल साइज जो होता है दैट इज व्हेन यू यूजिंग legitimate fonts like ID automation का font that will give you an option to minimize it more than 4.9. So like we have mentioned MRP and what is the product etc. And say this data is on the Excel sheet. I mean it's full from there. Yes. How does it work? It works. For example, you are going to type in MRP because here it has already gone past that period, so this is going to show. But you are going to link it to that particular file. And you are going to link it to a particular file. It will the column and the row will be on the left hand side. The variable data it will keep on fetching it one by one. You have to give a control key, give 10 things. So the 10 rows it will start. आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपको सुबह बताया था ना कोड 128 का होता है, कोड 39 का होता है, EN13 का होता है, सब कुछ दिया आपको। So your soft copy has that. Which one? The how to pull from a Yes, it has. It has very detailed information on what to do where. So you are cards and send us or You share us your email ID जाएगा, we'll collect all the इतना सारा कोड है, If you have a pen, हाँ, इतना सारा कोड तो है, लेकिन इसमें फिक्स होगा वो कैसे? वही तो सुबह बताया था आपको, कोड 39, कोड 128 और EN13 ये डिफरेंट एप्लीकेशन पे चलता है। ये कोड साइज कोड 128 का आपको डिपेंडिंग अपॉन कितना डेटा डालना है। कैन कोड 128 कैरेक्टर्स like code 39 can code 39 like 39 is used for parking lot ticketing application. That's a symbology which is used. It looks barcode, everything looks the same. It's one dimensional only, but it's a particular standard like a GS1 defines that in this particular application we have to use this symbology. In retail we have to use EN30. For example, in courier and warehousing you use code 128. This is not we, GS1 decides, and the customer also knows about it, that I have to use that. हम कैसे जान सकते हैं? कैसे जान सकते हैं? मतलब ये 128 का बोल रहे हैं जो 128 सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है राइट 128 128 आपने सिलेक्ट किया। आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? इधर आइए, मैं आपको बताता हूँ वेरी क्लियर। ये सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किया कोड 128 कोड 128 सॉफ्टवेयर सिलेक्ट किया तो आपका बारकोड दिखा ऐसे है। अगर आपको कोड 39 है तो कोड 39 आप सिलेक्ट करो, ओके, तो आपका बारकोड ऐसा दिखेगा। वही मैं बोला, अगर आपका रिटेल एप्लीकेशन हुआ वहाँ पार्किंग लॉट होगा, आपने अपना सॉफ्टवेयर पार्किंग लॉट में दिया तो उधर आपको कोड 39 यूज करना पड़ेगा। बहुत सारा है। नॉर्मली इंडिया में खाली 4 टाइप ऑफ सिलेक्ट होते हैं, कोड 128, EN13, कोड 39 और EN8। उसके अलावा कोई बारकोड सिलेक्ट होती है। जैसे अगर आपको ओवरऑल लिस्ट देखना है तो भी बताता हूँ, आप उधर बैठ कर सकते हो। नॉर्मल जो MRPs होते हैं सारे प्रोडक्ट्स में इंडिया में, दैट इज अ कॉमन आई थिंक दैट इज कोड 39 आई थिंक। हाँ, that's what I'm saying ना कि MRP से कुछ लेना देना नहीं। बारकोड क्रिएशन is as with respect to a particular application. Application, which application? Very simple. They are going to use that only. They are not going to deviate from that. Like a retail one, they use EN13 because that is the standard which is linked to their application. So it looks the same. At the end of it, it's a barcode, but it's a standard which is used for a particular application. I'll just give you an idea what type of barcodes are used. Establish standard barcodes like blood bank. You can use code of data metrics is used for automotive item identification. So this is from Google. So it has a list of barcode, but most of it probably you have not heard. Except for EN13, EN14 again for shipping cart.
So we are using 4 standards, which is very common, which we use in India. We don't deviate from that. These are the normal things which we use. They say that we can use Codeable for blood bank and tracking also, but GS1 has also given a clear understanding that you can use code 128 or for that. So it is a standard which is maintained by GS1, right? So they set it up. This is the application. Use this type of a barcode. It should work here. There is no other deviation apart from that, and that is how we have to follow. So there are confusion if he is posited some place, suppose at the retail counter, but that retail counter is just making this thing. Design. So he want to put this thing label. What kind of label he will put? Barcode he will put. What would be in that event? So that's why you have already given the Yeah, chart. that's what I told. In retail, जब अपन generate करते हैं, it's going to be EN30. For courier and warehousing, it's going to be code 120. Code 39 is for parking and ticketing slot. That is how we have to use it. Obviously, there will be a customer who knows about it, and when he generates it, he will tell you was generated in this particular standard only. Don't deviate. Don't use anything of your choice, because we cannot use anything of our choice. There is a purpose why a particular standard has been defined, so we cannot go against that. Right? From our angle and from a customer angle, all the barcodes look the same. So it is just vertical bars which are placed besides each other. Correct? Okay? So we'll wait for that. सर सिर्फ वो स्पीड स्लो हाँ, speed slow. आपने इसका कंपेयर किया क्योंकि बहुत जगह कस्टमर्स मतलब जो रिबन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती तो फिर वहाँ पे इशू आ जाता है कि प्रिंटिंग सही नहीं आता है वहाँ पे फिर डार्कनेस बढ़ाना पड़ता है डार्कनेस 10 तो जहाँ कोई तो इधर कम करो, so it is going to be होते हैं ना डायरेक्टली आप जैसे स्पीड वेरी करते हो तो उसी साइड से आपको डार्कनेस मैनेज करना पड़ेगा, डार्कनेस बढ़ाना राइट। तो ये ऑप्शन नॉर्मली अपना चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ड्राइवर में ऑप्शन है जहाँ आपको, लेकिन दोनों जगह पे करना पड़ेगा, एडवांस में भी और प्रिंटिंग डिफॉल्ट में, राइट। So any question you have regarding barcode, sir? No, so it gives me the soft copy and अच्छा. I'll go through that. सर जी तो सॉफ्ट कॉपी दे See, I can go to my. I understand the concept. I've tried it. I could not do it. right. I think I downloaded Bark and I tried to. Yeah. Ajay, I'm asking one minute. After 30 days, can we uninstall and reinstall That's what Barcode? no. You have to use a different PC for that. this point of view You have to format the PC. Format the PC. पूरी क्लियर हो जाएगा. एक्चुअली क्या है Why you required this thing? Uninstall करके install क्या एडिट नहीं होगा सर इस मॉडल More memory capacity. वही एक बार try करना. मेरा Windows 80 है. 3.5 कुछ .NET मांग रहा है और जब OS लोड करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क तो लोड होता ही है. तो अगर आपने इमेज लोड किया तो .NET तो अपना. .NET फ्रेमवर्क अगर डाउनलोड नहीं रहेगा अपडेट हो गया तो डॉट में कुछ दिक्कत होता है .NET framework is a must for any VB.NET software, right? Bartender is nothing but a VB.NET software. तो आपको माइक्रोसॉफ्ट अगर आपका सिस्टम पे नहीं है तो वो पर्टिकुलर वर्जन जो है .NET framework का 4 डाउनलोड कर लो, चल जाएगा. डाउनलोड नहीं किया वो इंस्टॉल ही नहीं